It's a new day, a new start with a new energy, confidence, and trust. It is greatest feeling for us as mothers. Our hearts are full of gratefulness towards iHat and its wonderful team for helping us in keeping our child healthy and HIV negative. What they have done for us, not even a family member could have done. Today, we are the happiest mothers. We are enthusiastic to share our life stories with you. We and our babies are the living testimonies of the generous and humane support that we got from the PPTCT project run by iHat. India Health Action Trust, iHat, with technical support from the University of Manitoba, Canada, has been working for over a decade now, impacting the public health issues, focusing on the maternal and child health, HIV and AIDS in 4 states of India. In the last 3 years, iHat worked in Pali and Dungarpur districts, designing and implementing the project Conditional Cash Transfer in PPTCT Management. Initiative was funded by the Viv Healthcare PACF, UK, and was supported by the National Health Mission, Rajasthan State AIDS Control Society, and UNICEF. The project aimed to contribute towards the global commitment of zero new HIV infections, ensuring a healthy life for HIV-infected mothers and their babies. Availability and accessibility of PPTCT services was a real challenge, particularly when it comes to the rural areas. These 2 districts were having only 4 PPTCT facility centers, catering to 3 million population and about 90,000 annual estimated pregnancies. So the real challenge was how to bring these clients to the PPTCT centers and providing them sensitized services. We had to design an outreach strategy to reach the remotest villages, habitats, and we have hired a team of women who were living with HIV, and they were the people who are having a complete experience of what does it mean about living with HIV. So they were really able to empathize with the clients and reaching out to them, counseling them, and bringing out them to the facilities. Intensive efforts were made by the iHat team to get the pregnant women mobilized for the PPTCT counseling and testing through various outreach strategies. These included regular health facilities based on individual client referrals, coordinated group referrals at the facilities on fixed day and accompanied by the ASHA or outreach workers, routine ANC health camps to cover remote villages, organized jointly by the project and government health centers staff, as well as utilizing the special health campaigns like Arogya Rajasthan. Audio preview. iHat ऑर्गेनाइजेशन की टीम पाली ज़िले में PPTCT प्रोजेक्ट पे इसलिए काफ़ी समय से काम कर रही है। पर्सनली आई एम एसोसिएटेड विद iHat और मेन जो इनकी एक्टिविटी है पाली ज़िले में जितनी भी हमारी प्रेग्नेंट वीमेन हैं उन सब तक इनकी पहुंच है, उनको अपने नेटवर्क में लेके आते हैं। इनके जो ORWs हैं वो उन महिलाओं को पर्टिकुलर सेंटर पे इकट्ठा करते हैं और उनके HIV स्टेटस मालूम करते हैं। इसका प्रोजेक्ट का मेन iHat का यही है कि किस प्रकार से गर्भवती महिलाओं में अर्ली उनका डिटेक्शन हो जाए ताकि वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गायनेकोलॉजिस्ट के संपर्क में रहें और उनके बच्चे में जो इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं निसंदेह iHat के सराहनीय प्रयास हैं। These pregnant women were not only enabled to access PPTCT counseling and testing services, but were helped with the conditional cash transfer CCT provisions, supporting their travel cost and followed up through regular home visits, ensuring service linkage till their babies completed 18 months of age. The medical and health department officials have been very supportive and forthcoming in accepting and adopting the project's initiated strategies for effectively reaching out
to difficult to reach areas. A joint planning and action was initiated for organizing a total of 211 ANC health camps, providing ANC checkup along with PPTCT counseling and testing to 10,915 pregnant women. The project's approach to do an integrated and decentralized planning along with the government health officials, functionaries at the district and sub-district levels led to place the PPTCT agenda on priority, which otherwise has been a neglected component. The project has oriented all the grassroots functionaries responsible to deliver maternal and child health services at the village level. These were mainly ANMs, Ashas and Anganwadi worker. Being the first point of contact for the pregnant women in villages, the need for sustained capacity building efforts for these grassroots functionaries, mainly of Ashas, was realized by the project. डूंगरपुर एरिया एज ए ज्योग्राफिकल देखा जाए तो काफ़ी हिल एरिया और काफ़ी पॉपुलेशन में काफ़ी स्कैटर्ड है, तो उसको कवर करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो जो सबसे अच्छा साधन है आम जनता तक पहुंचने के लिए वो आशा ही थी, जिसके थ्रू उन्होंने आशा से संपर्क करने के लिए जिसका बेहतर साधन था आशा सुपरवाइजर, जिसमें उन्होंने RDHIT ने उन्हें आइडेंटिफाई करके हर एरिया की आशा सुपरवाइजर से टच करके उन्हें ट्रेनिंग दी, उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन भी दिए ताकि वो उनसे आशाओं से बात करके फॉलोअप करके उनसे जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी वो आगे उन्हें सबमिट करा। Responding to this, IHAT has introduced the concept of Asha mentors while creating a local pool of trained Asha supervisors which can continue to act as a local resource even beyond the project period. 54 Asha mentors were trained. ज़्यादातर आशाएं हैं वो रिपोर्ट कर रही है और धीरे धीरे जो हमारे MD NHM है उनका भी यही कहना है कि सब लिंक होकर हमारी जो रिपोर्टिंग है और आशाओं का इसमें पूरा जो सहयोग है वो हमें मिलकर और एक हम काफ़ी अच्छी स्थिति में होंगे। PPCT परियोजना के तहत एक दिवसीय TOT का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में पाली जिले के कुल 33 आशा सुपरवाइजर को आशा मेंटर के रूप में प्रशिक्षित किया गया था। इस आशा मेंटर पूल को बनाने के पीछे मुख्य संकल्पना यही रही थी कि इस परियोजना में हम आशाओं की भागीदारी को लेते हुए सभी गर्भवती महिलाओं की ANC के दौरान ही HIV की जांच करें और वह परामर्श भी हम आशाओं के माध्यम से ही उन्हें दिलवाएं। यह कार्य आसान तो नहीं था पर मुश्किल भी नहीं रहा। इस प्रशिक्षण के बाद हम लोगों ने प्रत्येक माह में हमारे अधीन जितने भी कार्यरत आशाएं हैं उनसे HIV की जांच करवाने के लिए प्रेरित किया उन्हें। During the project duration, the estimated pregnancies in both the project districts were 2,60,278. The project has reached 27% of them providing PPTCT services. IHAT संस्था के द्वारा जो हमारे जिला पाली में 2013 से 2016 तक जो स्क्रीनिंग किया गया है गर्भवती महिलाओं में जो PPTCT जो प्रोग्राम के अंतर्गत जो HIV का जो टेस्टिंग इनके द्वारा किया जा रहा है तो हमारे पाली ज़िले में काफ़ी महत्वपूर्ण रहा और इसी के तहत हमने 43,085 महिलाओं का स्क्रीनिंग किया और उसके अच्छे रिजल्ट भी हमें देखने को मिले। जो हमारे जो 18 महीने का लगभग 1.5 साल का जो फॉलोअप होता है IHAT के द्वारा तो उसमें लगभग जो 32 जो बच्चों का फॉलो किया गया था उनमें HIV नेगेटिव मिला है। About 16,000 means 30% of the total tested pregnant women got benefited with the CCT provisions. IHAT has also filled the gap of HIV test kits availability at the government testing facilities as well as during the camp mode PPTCT tests. The project has contributed 36% test kits of the total tests performed. चाहे भाड़ी हो, चाहे गांव हो, चाहे कोई भी ऐसा एरिया है जहाँ प्रेग्नेंट लेडी मिलती है, हम या तो खुद मिलते हैं फेस टू फेस या फिर जहाँ MCH कैंडे होता है
टीकाकरण वहाँ पे आशा द्वारा उसका मोबाइल नंबर, उसके डिटेल लेके उसके नंबर लेके उसको फ़ोन करते हैं और उसको हम अपने घरों PSC CSC पे ले जाके उसका HIV टेस्ट करवा देते हैं। और जिनकी स्थिति ऐसी है कि उनके पास किराया भाड़ा नहीं होता है तो हमारी संस्था जो इंडिया हेल्थ एक्शन संस्था है वो किराया भाड़ा भी देती है। Arogya Rajasthan Abhiyan was initiated by the government in the later half of the third year of the project. It was an innovative campaign for creating individual e-health cards. India Health Action Trust team, in consultation with the CMHO Pali, has decided to use Arogya Rajasthan Health Camps. Arogya Rajasthan Health Camps opportunity to mobilize and encourage maximum number of pregnant women for attending these camps and availing the PPTCT counselling and testing services. IHAT team had mobilized community to attend these camps in their panchayats as well as provided the HIV test kits. तो जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं, हमारा उद्देश्य है कि भी उनकी जो HIV टेस्टिंग हो और इसमें हम पता कर पाए। इसके लिए बहुत ही जो यहाँ पे हमने एक नया प्रयोग जो आरोग्य राजस्थान है उसके दौरान किया गया। आरोग्य राजस्थान के जो शिविर भी आयोजित किए गए थे राजस्थान सरकार के द्वारा, उसमें भी IHAT संस्था का सहयोग हमें मिला, जिसमें करीब 223 गर्भवती महिलाओं की जांच की गई। All 204 identified pregnant women with HIV have been taken into the PPTCT service net and were followed up till the babies born to them completed 18 months of age. Beyond the project, it was proposed to the government that Ashas need to be incentivized for individual case tracking of all the identified HIV positive pregnant women and their babies, linking them with PPTCT services. एरिया ऐसे भी हैं जिसमें हमारी आशाएं नाव चला के दूर दराज के एरिया से महिलाओं को लाती हैं और उन महिलाओं को हर घर से मतलब उनको लाना, उनको समझाना और नाव में बिठा के बड़ी मुश्किल से उनको PSC से 3 किलोमीटर की दूरी तक लाना और उनकी जांच करवाना हमारे आशाओं का बड़ा योगदान रहता है इसमें। और जिसमें एनएम की बड़ी भागीदारी है। In terms of project results, project was able to screen 70,000 women for HIV and 204 women who were detected positive, they were followed up by the outreach workers till the entire pregnancy period and making sure that they are delivered at the institutions, and then their babies get all the vaccination till 18 months of age. 3 tests were provided to ascertain whether they are positive or negative. So that was a big satisfaction that project was able to almost cover 28% of the total estimated pregnancies in these 2 districts. The initiative demonstrates a great example of how a small team of 35 project functionaries can work effectively and efficiently, covering the 2 large-sized districts, having 2,000 plus villages and a spread of more than 16,000 square kilometers, reaching out to the pregnant women and their babies. This has only become possible by having a dedicated team of peer outreach workers, ensuring the community and stakeholders' engagement and involving a large force of community health workers, a AAA in building comprehensive PPTCT response.